Hi everyone, today we are going to talk about life skill activity. In life skill activity, we are going to do cooking without fire. Life skill activity का मतलब क्या होता है? मतलब होता है to be independent. अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, हमें थोड़ा independent होना चाहिए. So we are going to make sprouts chart, जिसमें हमें cooking without fire है, उसमें हमें फायर की कोई जरूरत नहीं है. देन यू कैन डू दिस वर्क. आई हैव एन एम्प्टी बाउल और हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं. आई हैव स्प्राउट्स एंड अनियन, चॉप्ड अनियन, लेमन इज ऑल्सो देयर, टोमेटो एंड नमकीन एंड चाट मसाला. इट इज फॉर टेस्ट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग स्प्राउट्स. और हम ये बना क्यों रहे हैं? यू नो, मदर्स डे इज कमिंग और आपकी मम्मा आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल बनाती हैं. तो दिस इज योर टर्न. इस संडे मदर्स डे है. यू कैन मेक स्प्राउट्स चाट फॉर योर मदर. सो व्हाट टू डू? यू हैव टू टेक स्प्राउट्स. टेक 4 spoon sprouts in an empty bowl. 1, 2, 3, 4, 5 spoons you can also take. I am taking 5 spoon sprouts, then onion, 2 spoons onion, 1, 2, then this is tomato. I am going to take tomato, 1, 2 and 3. Now is the turn of namkeen. चाट बना रहे हैं ना, so we should use namkeen also. 1, 2 and 3. Here's चाट मसाला. आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं. It is up to you. आप चाहते हैं उसे स्पाइसी बनाना, then you can put चाट मसाला in it.